and welcome back to our channel. This is Trisha and today we will be learning the chapter metals and non-metals. Chemical properties of metals. Chemical properties of metals. First of all, we have learned that the metals are electropositive in nature, means they have positive ion. They are cations. Yes? So, now I'll be telling you how can we say that the metal is electropositive. For this we have to learn the concept of a term called ionization enthalpy. Ionization enthalpy is a term. This term basically means this ionization enthalpy is nothing but a minimum amount of energy. That is minimum amount of energy that is required, that is needed or required to remove an electron from the outer valence shell of a isolated gaseous item. From the outer valence shell of a isolated gaseous atom. This is called ionization enthalpy. Minimum amount of energy that is needed to remove one electron from outer valence shell of an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. Ionization enthalpy एक एनर्जी होती है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन उस गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर वैलेंस सेल से निकाल सके, जिससे एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन निकाल सके, रिमूव कर सके अपने आउटर वैलेंस सेल को. उस एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी. अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर, देन it would be harder for the substance to remove electrons, so it will gain. Okay, and if the ionization enthalpy is low, it is easier to lose an electron, remove an electron. To remove an electron or lose an electron, it would be easier if ionization enthalpy is low. Now you can understand by this term, metals can lose electrons very easily. So they have what? Low ionization enthalpy, whereas non-metals gain electrons. So they must be having high ionization enthalpy. And when the ionization enthalpy is high, they will gain electron. Gaining electron means negative sign, and they are electronegative. Then non-metals are electronegative, whereas metals, they lose electrons. Positive charge, electropositive, lose electrons. Understood? I hope you have understood the concept of electronegative nature of non-metals and electropositive nature of metals. Electropositive कौन होते हैं? Metals, and who are electronegatives? Non-metals. Now let's move on to topic chemical properties of metals, which is your today's main topic. Chemical properties of metals. So let's move into chemical properties of metals. तो इसको अंडरस्टैंड करने के पहले हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक एग्जांपल ले लेते हैं. यस, M represent what? Metal. Okay. See, M represents a metal which is in isolated gaseous state. Plus, it is a plus sign, not symbol. Okay, plus sign
लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है यानी एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, वो लग जाती है, देन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन m plus, okay, it will lose an electron. M is in which state? Gaseous. M is in gaseous state, isolated gaseous state, and आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया बहुत इजीली। क्यों? इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम होती है, लो होती है। और अगर इसके जगह नॉन मेटल होता या फिर अगर कोई वीक मेटल होता तो फिर इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा लगती और इसीलिए नॉन मेटल्स क्या कर लेते हैं, गेन करते हैं। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देयर आर 7 प्रॉपर्टीज, उसमें सबसे पहले आपको एक मिल जाएगा रिएक्शन वर्ड इन कॉमन, reaction with oxygen, reaction with chlorine, reaction with water, reaction with hydrogen, and displacement reaction, reducing property, and reaction with dilute acids. ये सब क्या है? इसमें सबसे कॉमन वर्ड क्या आ रहा है? रिएक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, द मेन टॉपिक विच इज काइंड ऑफ लेंथी। तो द नंबर 1 प्रॉपर्टी विल बी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। यस, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब देखो, ऑक्सीजन, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, दिस इज X and this is plus, okay? Metals react with oxygen and they form basic metallic oxide. I'm writing in bracket, and they form metallic oxides. They form metallic oxide that are basic in nature. अब चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लेंगे? सबसे इजी एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू MgO, O2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाँ, तो सबके बराबर हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस। तो ये क्या हुआ? मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, एक अपना मेटालिक ऑक्साइड दिया, लेकिन ये क्या है? बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो ये समझ में आ गया क्या रिएक्शन होती है तो क्या होता है? मेटालिक ऑक्साइड बनता है, दैट इज बेसिक इन नेचर। तो अब इस रिएक्शन विद ऑक्सीजन के अंदर ही कुछ सब पार्ट्स भी पढ़ेंगे। अब उसे बच क्या है? पहला सब पार्ट है, पहले सब पार्ट है solubility in water, oxide solubility in water। मेटालिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये Na2O sodium oxide plus H2O will give you what? NaOH। अब बैलेंस कर लेते हैं। 2, is it balanced? Yes, it is balanced. अब Na2 plus water, सोडियम ऑक्साइड मैंने वाटर से रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी एक मेटालिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड। वेरी, आई होप यू अंडरस्टूड। फर्स्ट सब पार्ट क्या हुआ हमारा? solubility in water. The first sub part we have learned right now was solubility in water. The next sub part is amphoteric oxides. This is very important topic. I mean subtopic, amphoteric oxides. अब amphoteric oxides क्या होते हैं? Amphoteric oxides are the oxides which react with acids as well as bases. Amphoteric oxides are the oxides which react with bases as well as what? Acids.
तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड की. इज जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ये दो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. हम ले लेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. अब एक एसिड ले लो, सबसे इजी HCl ले लो. रिएक्ट करते हैं. चलो क्या बनेगा? AlCl3 plus H2O. Let's balance it now. ये 6 होगा and yes, and let's make this also 3 oxygen 3, ये भी 3, hydrogen 6, chlorine 6, aluminum 2. This is now balanced. Equation is balanced. Aluminum oxide reacts with HCl will give you what? AlCl3 base है, सॉरी. अब बेसेस से रिएक्ट करते हैं. एक बेस ले लेंगे हम, NaOH ले लेते हैं, यही लूँगी मैं. Al2O3 plus NaOH will give you NaAlO2 plus H2O. Let's balance it now. It is 2. Let's add here 2 and here also 2. Oxygen 2 plus 3 यानी 5. 2 2s are 4. 4 plus 1 5. Hydrogen हमारे हो गए 2 and aluminium 2. This equation is also balanced. Now you can see amphoteric oxides property क्या है? एसिड और बेसिस दोनों से रिएक्ट करेगा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और उसने क्या एसिड से भी रिएक्ट किया, बेसिस से भी रिएक्ट किया. सेम इज जिंक ऑक्साइड भी रिएक्ट करते हैं दोनों से. दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. विल बी चेकिंग इट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सब पार्ट, द लास्ट सब पार्ट ऑफ दिस टॉपिक of today's video. Third, speed of reaction. Speed of reaction with oxygen. अब देखो, बहुत अलग अलग टाइप के मेटल्स होते हैं. फर्स्ट मेटल्स जो रूम टेम्परेचर से बहुत इजी रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं और बहुत विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं. ठीक है, टेम्परेचर. दूसरे जिन्हें हमें थोड़ा हीट करना पड़ता है. तीसरे दे नीड प्रोंगल्ड हीटिंग, दे नीड हाई लेवल ऑफ हीटिंग. इन्हें बहुत हीट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा. दे नीड हाई टेम्परेचर. and then is low reactive, which do not react. Low reactive, they don't even react at the high temperature. Okay, low reactive. And the last type is they form passive layer. Some oxides form passive layer, some oxides are reacting with on room temperature, some are low reactive, some require heat, some require high temperature, very high temperature. Okay, so let's take the first reaction at room temperature. Sodium or potassium highly reactive, so they react with oxygen at the room temperature. तो react करके देखते हैं. Na+O क्या होता है? O2 Na2O, right? So let's balance it. Oh sorry, 4 यहाँ पे 2. ठीक है, it is now balanced. Sodium plus oxygen at the room temperature बहुत vigorously react करता है, बहुत जल्दी react करता है, and then Na2O is formed, sodium oxide. Same potassium, और इसलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है because they react
with atmosphere. At the room temperature, they react very vigorously, very violently. And the next is they are high reactive. कौन से? सोडियम और पोटेशियम और सोडियम. They are highly reactive, तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं रूम टेम्परेचर पे. अब दूसरा है कौन सी जिन्हें हीट चाहिए होती है? आयरन. आयरन ले लेते हैं हम. आयरन को बहुत हीट चाहिए होती है, थोड़ी हीट चाहिए होती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए. O2 will give you Fe2O3. Yes, Fe2. हाँ, so let's balance it. तो ये हो गया फेरिक 2 और 3 ऑक्साइड. हाँ, तो हाँ, एक मिनट. Reaction of iron with oxygen will be Fe plus O2 will give you Fe3O4. What? Fe3O4. Now let's balance it. तो बैलेंस का डिबक हो गया. और इसको क्या चाहिए होती है? हीट. थोड़ी हीट इसे चाहिए होती है रिएक्ट करने के लिए. तो ये कौन सी हो गई? थर्ड टाइप ऑफ मेटल्स हो गए. तीसरे टाइप ऑफ मेटल्स कौन से होते हैं? कॉपर. कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर. कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है. यस. तो लेट्स बैलेंस इट टू. Yes, and this is of black color. Black color. अब हम बात करेंगे फोर्थ टाइप की. किसकी? फोर्थ टाइप की. फोर्थ टाइप कौन से होते हैं? इसको प्रोंगल हीटिंग चाहिए. कौन सी हीटिंग? प्रोंगल हीटिंग. बहुत हीट चाहिए होती है इसको रिएक्ट करने के लिए कॉपर को ऑक्सीजन. हाँ, तो इसे प्रोलॉन्ग्ड हीट चाहिए होती है. हाँ, प्रोलॉन्ग्ड हीट चाहिए होती है, यानी बहुत हीट चाहिए होती है. स्ट्रॉन्ग हीटिंग. इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन. व्हाट? कॉपर. कॉपर नीड्स हाई टेम्परेचर टू रिएक्ट. द फोर्थ वन इज व्हाट? दे डोंट इवन रिएक्ट. कौन कौन से हैं वो? गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर. ये सब रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, दे आर व्हाट? लो रिएक्टिव. कहाँ होते हैं ये? रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में. यू शुड वॉच केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वीडियोस in which I have given the reactivity series mnemonics. You can watch it and memorize everything. The fifth is platinum. Okay? Yes. The fifth is they form passive layer. कौन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. अब मैं पहले रिएक्शन देती हूँ. Al plus oxygen will give you what? Al2O3. Yes. अब ये Al2O3 क्या है? पैसिव लेयर है ये. क्या है? It is a passive layer. First let's balance it. Balance it. Yes, it is balanced. This aluminium reacts with oxygen to form Al2O3, means aluminium oxide, and this aluminium oxide is a passive layer. It is a passive layer. And same magnesium also reacts with oxygen, magnesium 2. I'm writing here magnesium 2. You should practice the reaction with magnesium.
they react with magnesium to form passive layer 2. We have completed 5 types. Let me memorize. पहला टाइप, they are highly reactive, बहुत जल्दी रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं. दूसरे, इन्हें थोड़ी हीट चाहिए होती है बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन दीज. और इसमें क्या होते हैं, पोटाशियम और सोडियम, जिन्हें हीट चाहिए होती है, आयरन, और जिन्हें प्रोलॉन्ग्ड हीट चाहिए होती है, जिन्हें strong heat चाहिए होती है. They have to be at the high temperature to react with oxygen or copper, and they do not react because they are very low reactive, and these form the passive layer while reaction. Okay, after reacting they form the passive layer, the fifth one. Now in today's video we have learned the solubility with water, oxide solubility with water, oxides, the metals, how react with oxide. When the metal react with oxide, they form basic metallic oxide. Then they react with water to form hydroxides, and then these metals react with oxygen at different speeds, different kinds. So in next video we'll be covering more chemical properties. Thanks for watching the video.